Okay, so we have about मतलब 40 minutes. ठीक है, 40 मिनट है हम लोग के पास. So I thought हम कुछ we learn something and बहुत दिन से जो पेंडिंग हो रहा था which I wanted to teach. So I thought we'll do that. So before that, shalom and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. You all happy? Yes. Yes. It's okay. So even yesterday as we were talking, I told I have to teach about the science of making all things new. सब चीज़ को नया बनाने का नियम. और yeah, I think that will be a good answer. Okay. So the science of making all things new. So ये क्या है कि God's making all things new. So obviously हम लोग को जो question आएगा is about what about New Testament or what about salvation. ऐसा बहुत सारे questions आ सकता है. So God willing, I believe that after this session we will have some clarity about the biblical doctrine of making all things new. Okay, so just give me your undivided attention. It's a very important class. It's something which you have to carry on for your entire life because the entire Bible is almost based on this. So to put it in other words, जो शिशम ने बोला, there are a lot of confusions today is based on this. So परमेश्वर तो सब नया बना दिए. So what is the thing? So if you remember when I was teaching about hermeneutics, rule number 6, I told you something. Rule number 6 is what? The divine law of immutability. तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताया था. God does not change. परमेश्वर बदलते नहीं हैं, but people do. लोग बदलते हैं. God is forever the same. It's only the people who change. So this is something which we have to remember. And okay. So now first let's address this thing. What about New Testament? नया नियम. अगर हम कहेंगे कि there is no such thing as Old Testament and New Testament, it's wrong translation. So actually अगर आपको देखना है, a proper word for New Testament is actually not New Testament. If you see in Hebrew, it's what? Brit Hadasha. Brit Hadasha means renewed. It doesn't mean new, it means renewed. And it's good. If you see in the scholarly world, they address it as the First Testament and the Second Testament. पहला नियम, yeah, those are it. Yeah, not Puran. See, when you say old and new, we get the feel that old is something, Purana hai, old. It's actually not like that. Genesis to Revelation is the word of God and it's applicable towards the ends of the earth. So there's no difference in that. So don't avoid using the word old and new. Okay, Purana or Naya. So first let's see what about New Testament. So if you see to get some clarity on this, let's go to the root of it. ठीक है, उसका मूल पे हम जाएंगे. Oh, I already have spoken about this before. When you are learning something, it's important that you start from the root. शुरुआत से start करना. So let's go and see where is the precedence first in the Bible for New Testament. Anybody knows? नया नियम का the starting point or the foundation you can say on, because नया नियम अचानक कहीं से भी नहीं आया. It came from the Old Testament, right? The concept of New Testament I'm saying. So let's see. Anybody knows where is the precedent or where is the root for even the word New Testament? For शब्द. genealogy कैसे? Okay, see the point is, I'm asking you the concept of New Testament. नया नियम का सोच, नया नियम का सिद्धांत कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्लोज थोड़ा सा नहीं, एशिया में नहीं, बट क्लोज. इट्स नॉट फ्रॉम एशिया. Okay, read Jeremiah 31. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने
जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा. Now here if you see in Jeremiah 31, it is primarily based on this verse that it is taken as a proof that परमेश्वर नया नियम करके कुछ चीज़ देंगे. Yes, okay, read once again, एक और बार. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा. नया वाचा, न्यू कवनेंट. ओके, एक्चुअली आजकल ये शब्द लेके नया वाचा, न्यू कवनेंट करके बहुत सारे कलीसिया भी स्टार्ट, न्यू कवनेंट चर्च करके स्टार्ट भी हुआ है. नाउ टू बेसिकली अंडरस्टैंड, this is the verse which is taken as a proof text for New Testament. Okay, वो नया नियम, पुराने नियम में परमेश्वर ने बता दिया नया नियम करके एक चीज़ आएगा करके. So now it's very simple. Now you have to just explore this particular verse in Hebrew. As you all know, Old Testament is written in Hebrew, New Testament is written in Greek, and there are few parts of the few chapters of the old prophets. Example, Prophet Daniel is कुछ chapters was written in Aramaic. Okay, Aramaic and Hebrew are what? Sister languages. दोनों भाषा almost बराबर है, अक्षर सब सेम है, but the words pronunciation might differ slightly. But what is the more or less the same? So now, what is the Hebrew word used over here? If you see Jeremiah 31, I will make with you a new covenant. Okay, the word used over there is Berit Chadasha. Berit Chadasha. Okay? New covenant. Now it is very simple. You have to just know the meaning of the word Chadash. Berit is what? Covenant. Chadash is translated as new covenant. But Chadash का असलियत क्या हम जानेंगे? We will know what is the actual meaning of Chadash. But what is the word translated for Chadash? Here, what is the word which is translated for Chadash? New. Sorry. The word translated is new, but what is the original meaning? We will see that. Now, before that, you should know something. Old Testament is written in Hebrew, New Testament is written in Greek. Now, even though the New Testament was written in Greek, all the authors are who? सब लेखक कौन थे? Hebrew. कहाँ पे लिखे थे? The people who wrote were Hebrew, their native was Hebrew, and also the message conveyed was Hebrew, Hebraic. It was not Greek. But Greek was a lingua franca at that time. Greek जो था, lingua franca is for use for political business, social purposes. जैसे आज अगर आपको एक किताब लिखना है, आप इंग्लिश में लिखोगे क्योंकि सब लोग पढ़ पाएंगे. So, but the message was Hebrew. So that's why even you see the book of Revelation, even though Greek, it was written in Greek, it is the entire message is Hebrew. You already learned that, so I just gave you as an example. समझ आ रहा है? Yes. So you should remember this, that the Greek authors, the Hebrew authors used Hebrew equivalent words and put it in Greek. But the message what they wanted to convey was what? Hebrew. They just used equivalent words in the Greek and put it in the text. Okay. So now, what is the meaning of Chadash? The Greek, before that, the Greek equivalent word for Chadash is kainos. Kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos. Chadash जो हिब्रू शब्द है उसका ग्रीक इक्विवेलेंट वर्ड इज काइनोस. Now you have to, we are coming to an important point. Now नया नियम में सब लोग इसको सुन लीजिए. नया नियम में कहीं पे भी wherever the word new covenant, okay, नया वाचा जहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है, it uses the Greek term kainos. Got it? Now इसका मतलब क्या है? Kainos का मतलब means to renew or rebuild. Renew, rebuild or refresh. That is the meaning of kainos. Kainos does not mean totally new. You got the point?
What do you say for radio in Hindi? Radio or rebuild? है उसको और अच्छे से हाँ. It is a fulfillment. Now I'll tell you something very simply. Jesus Christ, what did he say? I have not come out to abolish them, but I have come to fulfill the law. Now what people generally perceive is when Jesus said I have come to fulfill the law, अच्छा सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ परमेश्वर पूरा कर लिया. Now it's very simple. अगर एक ग्लास है, ओके, सो मान लीजिए मेरे सामने एक ग्लास है यहाँ पे और उसमें पानी नहीं है और पानी कम है, तो सूरज क्या करता है, पानी आके पानी फुलफिल, ही फिल्स द कप. तो अभी उन्होंने क्यों कप को भरा? थोड़ा पानी दो उसमें। ठीक है, अभी वो कप को भरा इसीलिए क्योंकि मैं उससे पी लूँ या उसको फेंक दूँ? पीने के लिए. सेम थिंग, जब मसीह आए थे टू फुलफिल द लॉ, मतलब उसको लेके अब पालन करने के लिए, उसको फेंकने के लिए नहीं. You got the point? When we say Jesus Christ came to fulfill the law, it doesn't mean that now he has fulfilled that you throw away everything. He has filled so that you take part in it. You got the point? Now kainos means to refresh, rebuild or renew. ठीक है. अभी आपको एक सवाल आ सकता है. So from this you understood something very clearly. There is nothing called as new. ऐसा कुछ नया, totally new करके कुछ भी नहीं है. It is only renewed. So now you might have a very big question. Then what about salvation? उद्धार के विषय में क्या? उद्धार के विषय में पुराने नियम में लोग they got saved by वो आज्ञा को पालन करना था, हम लोग को ऐसे उद्धार मिल गया. You might have this question. So the question about what about salvation? How are we saved? हम लोग कैसे विश्वास, सॉरी हम लोग को कैसे उद्धार आया? Very good, very good. दो categories. By confessing of the mouth and believing in the heart. So हम लोग विश्वास के वजह से उद्धार लिए हैं. तो अभी सवाल आता है, ठीक है, अगर ये चीज़ नया नहीं है तो फिर पुराने नियम में लोग कैसे उद्धार पाते थे? पश्चाताप करके. Take Hebrews chapter 11. Just read the first few verses. Actually, you should read the entire thing, but let's, since we run out of time. अविश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Continue. 11 ना ही. क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई. विश्वास ही से हम जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई. कैसे? विश्वास से. आगे बढ़िए. क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया. विश्वास से. आगे बढ़िए. कि मृत्यु को ना देखे और उसको उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. Okay, go to verse 17. विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था. Verse 21. विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया. Continue. विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियां के विषय में आज्ञा दी. विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा,
क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। थैंक यू। सब लोग पुराने नियम में कैसे जीते थे? विश्वास से। सो विश्वास इज नॉट समथिंग न्यू। पुराने नियम में और कुछ था, नया नियम में हम लोग अभी विश्वास में आ गए, अभी पूरा विश्वास विश्वास। नो नो नो, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग हाउ द ओल्ड टेस्टमेंट पीपल लिव। You got the point? There is no such thing as पुराने नियम में they lived a very different spirituality and now we are living in a totally different spirituality. ऐसा कुछ है नहीं. Now how was Abraham saved? Okay, Abraham का उद्धार कैसे हुआ? Read 50 Genesis chapter 15 verse 6. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। There, now you have to understand something. What here it's called as zadik, what is called as righteous, the equivalent is हम लोग जो salvation बोलते हैं. Now we use the word salvation, but if you go to the Hebrew side of the world, they say zadik. Are you a zadik? Zadik, a person who follows God who is saved. So the equivalent word for righteous is what? Right? Is salvation. जो हम लोग salvation बोलते हैं, that is here it is righteousness. So how was Abraham saved? Abraham believed in the Lord. Now अभी वो वचन को ये वाला शब्द के साथ रिप्लेस करके पढ़ लीजिए. धार्मिक की जगह पे उद्धार. हाँ. उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में उद्धार गिना। Salvation. उद्धार पाया। Fantastic. Abraham believed in the Lord and it was called righteousness. Now the same thing you see with another example I'll give you. It's Psalm 91. हम सब जानते हैं, by heartly we know Psalm 91. What is the context of Psalm 91? King Suleiman का dedication. Okay. Okay, bar mitzvah, fantastic. Sorry. So now in Psalm 91 there are three characters. तीन चित्र हैं. कौन कौन? दाऊद, सुलेमान, परमेश्वर. Now have you taken Psalm 91? Okay. First verse. पहला वचन. King David is telling to his son Solomon. उनके बार मिtzvah में. दाऊद राजा सुलेमान को देखे क्या कहता है? He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. अभी दूसरा वचन में क्या है? सुलेमान का जवाब. सुलेमान क्या जवाब देता है? Again, pay attention. I will say of the Lord. मैं यहोवा के बारे में कहूँगा. हाँ, पहला मैं कहूँगा, भरोसा रखूँगा. How is a person saved? Believes in his heart and confesses his mouth. सुलेमान अभी क्या कर रहा है? मैं I will confess in whom I trust. It's something to do with the heart. मैं भरोसा करूँगा. So who believes in his heart and confesses in his mouth. सुलेमान बोलता है I am confessing, I am believing. The same criteria how we are saved. How we are saved? We believe in our heart and confess with our mouth. The same thing Suleiman is saying, I will say of the Lord, I confess with my mouth, in whom I trust, I believe in my heart. जब ये दोनों आता है, आखिरी वचन परमेश्वर क्या कहते हैं सुलेमान को? With long life I will satisfy him and show him my salvation, Yeshua. Now you are saved. So how do the people of the Old Testament obtain salvation? The exact same way how you and I obtain salvation. Hallelujah. Now, when I have time, God willing in the future, I will take a session on God's spoken word, written word, manifested word. Okay, it's a very interesting session. I actually took this session long back, Yeshiva. You will get a very clear thing. God's spoken word, God's written word, and God's manifested word, Yeshua.
they three have the exact same power and they three have the potential to do the exact same thing. So we all are saved by the exact same thing. We are saved by God's manifested word. They are saved by God's written word or spoken word. They three have the power to bring salvation. Now this I can't just say it in 2 or 3 minutes, but God willing, when it needs 2-3 hours of session at least. So I will give you a lot of examples, and God willing we'll do the session. Remember this, just for now, God spoken, written Torah, manifested Yeshua. ये तीनों के पास उधार लेने का सामर्थ्य है. हम वी आर सेव्ड बाय व्हाट? ओके, आप एक चीज बताइए, आज जो यहूदी है उधार पाए कि नहीं? ओके, उनको कैसे उधार पाए हैं? बाय गॉड्स रिटर्न वर्ड. हम लोग कैसे उधार पाए हैं? बाय गॉड्स मैनिफेस्टेड वर्ड. आदि में वचन था, सही है. So the three have the thing to, we'll do this in detail later. So one thing you have to understand, नया नियम में नया कुछ भी नहीं है. I'll just to just strengthen this point, let's read one more verse. Romans chapter 3 verse 31. तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं. What do we do? Should we abolish the law? Yeah, again, who is the writer of Romans? रोमियो की पुस्तक कौन लिखा? रोमियो की पुस्तक सही है, Paulus. Now why I am emphasizing Paulus? Because it's because of Paulus हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? He has abolished everything. Now, and I remember something I heard in the YouTube, one of the fake preachers, वो क्या कहता है? Again, listen to this, it's very interesting. वो preacher ने क्या कहा? मैं आपको एक गारंटी लिख के दे सकता हूँ, गारंटी, आप सब स्वर्ग चले जाएंगे. और सब लोग ऐसे नॉर्मली हाथ ये करके फिर सब लोग विसल और एंजॉय कर रहे थे. फिर पूछे कैसे, क्यों, कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? अगर कोई आपको रोकेगा, अगर जब आप स्वर्ग वो आखिरी दिन में अगर कोई आपको रोकेगा, नहीं आप स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकते, मेरा नाम आप बताओ, ठीक है, मेरा नाम बताओ. फिर अगर मुझे आके पूछेंगे, मैं पौलुस का नाम बताऊंगा. पौलुस का नाम मतलब देखिए, वो ऑडियंस को ऐसा कैप्चर कर रहा था, बट द पॉइंट इज इट्स टोटल नॉनसेंस. दैट्स अनदर थिंग. आई जस्ट टेल यू फॉर द सेक ऑफ सेइंग हाउ वो सेड, अगर वो मुझे रोकेंगे, मैं किसको दिखाऊंगा हाथ? पौलुस को. फिर अगर पौलुस से पूछेंगे, पौलुस किसको दिखाएगा? मैं तो ठीक जा रहा था, दमस्कस के बीच में आप आए थे, मुझे ये दिए थे, फिर मैं यीशु मसीह को दिखाऊंगा. तो अगर मैं नरक जाऊंगा, मैं जरूर पौलुस को भी साथ में ले जाऊंगा. तो अगर पौलुस को पकड़ के पौलुस किसके ऊपर हाथ दिखाएगा? यीशु मसीह को. तो अगर यीशु मसीह नरक आ जाएंगे, पिता भी नरक आ जाएंगे. अगर पिता नरक आ जाएंगे, नरक स्वर्ग बन जाएगा. Again, see, to hear this, it seems nice, but just see the stupidity behind this. God, this is Romans. This is, we are not going. बाइबल का बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं था. करेक्ट. रोमन्स इज कमिंग. अगर आप नया नियम का टीचर हैं, so just imagine, I was like, see again the thing is, ये बोलने के बाद तुरंत BGM और वो सब साथ में आता है, and लोग एकदम खुश हो जाते हैं. You see the stupidity behind this, right? So you should know something, that when you know the concept of new, नया के बारे में जब आप ये अर्थ को जानते हैं कि नया, new does not mean new, it means renewed, but it has been wrongly translated as new. It actually means what? It actually means renewed. Uncle, just 5 minutes. It actually means what? It means renewed. It does not mean new. So when you know this concept, a lot of things in the New Testament becomes very, very clear.
Now remember this, as I already इसके पहले भी बता चुका हूँ. What is the purpose of New Testament? The purpose of New Testament is to quote passages of the Old Testament and explain them. नया नियम का मकसद पुराने नियम का passages quote करके उसको समझाना. Now it becomes very clear. In the first semester you learned about canonization. Now the canonization becomes very clear. Thus saith the Lord. It should have passages of the Old. That is what is in the New Testament. So the purpose of the New Testament is to quote passages of the Old Testament and reveal them. Okay, explain them. Now I'll show you some. Just finish this. Uncles also come. So just with one verse we'll finish. Take Revelation chapter 21 verse 5. जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है. Now just pay attention to this. इसके ऊपर ध्यान दीजिए. It's very important. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Behold, I make all things new. सिर्फ वो वाला शब्द पढ़ लीजिए हिंदी में. Behold, I make all things new. देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. मैं सब कुछ नया कर देता हूँ. I make all things new. Now, note this carefully. It doesn't say, it says over here, I make all things new. It doesn't say I make all new things. There is a difference between making things new and making new things. You got the point? चीजों को नया बनाना और नया चीजों को बनाने में फर्क है. Right? It says over here, behold, I make all things new. Meaning, see, as I told you the meaning of new, it means renewed. Oh, Hadash, yes. Hadash means renew also. Yes, Hadash is renewed. That's the concept. Yes, sir. Thank you. So, for example, you see, Jesus Christ says, the one who is in me is a new creation. All things have passed away, everything has become new. Now, do you all believe that verse? Yes. All of you believe that one who is in Christ is a new creation? Oh, tell me something. Okay, one who is in Christ is a new creation, but I have the same body, I have the same eyes, I have the same hands. What does it mean, new creation? It's I'm renewed. I'm not the same person who I was before salvation. Are you getting clarity on this concept of new? Yes. I'm a new creation, meaning I'm a renewed creation. I'm not a new creation. Obviously, everybody knows we all have obtained salvation. We have the same hands, we have the same legs, we have the same mouth. We are living in the same world. We are not new. Now pay attention to this verse. I think this will give a very good conclusion to this topic of new. Here Jesus is saying, I make all things new. मैं सारे चीजों को नया बना रहा हूँ. मैं नया चीज को नहीं बना रहा हूँ. I'm not making new things. I'm making all things new. Things that already exist. Things that perfect. That's things that already existing. He's not going to create something totally new. Something that's already there. उसको क्या करते हैं? He's renewing that, and that is what is the concept of new. So have you, long time this was pending, so have you got a clarity on this? Now when you understand this concept of new, lot of doubts in the Old Testament, New Testament will get cleared. No, this is new, that is new. Everything, in other words, nothing is new in the New Testament. Okay, any doubts? Fine, so we'll, thank you everyone. So we'll have a 5-minute break and then you come back for the next session.